So this lecture is about the introduction to research process and scientific writing or scientific paper. The first thing that is the diagnosis. Uh, when you are going to see doctors, the first thing which he or she do that is diagnosis. If it's not good, if that doctor is not good in diagnostic, so it will be very difficult to have a good treatment. Uh, the same way, when we are going to solve any problem, when we are going to find out the solution of any problem scientifically, so we must have a diagnosis. So, what is diagnosis basically? Because this is a independent process, and nobody is there with you to ask about their issues. जिस तरह मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो वो उसको बताता है कि मेरा ये मसला है, बट यू आर नॉट हियर, यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम बाय योरसेल्फ. Or sometimes, so there are some funding agencies, or you are going for a PhD or master, and your supervisor asks you to develop a proposal on this specific topic. So that topic is mean the diagnostic has already been done, or the diagnostic has been done partially. Some of the part has already been done by your supervisor or funding agency. They know that this is your research area, and they are asking you uh, to develop a research proposal for that. The first thing, that is target group identification. That is based on your expertise. If you are an environmental scientist, if you are a soil scientist, and even in soil science, if you are a nutrient manager, or you are a microbiologist. So based on that, you target your group, that in which group you are going to apply for funding, and in which group you are going to work scientifically to solve issue. So this is the first which you have to do. And then the other one, that is a problem identification. So in that field, then you will identify the problem. For example, you are a soil scientist, your area is soil science. And in soil science, you will identify the problem, that which problem exists, so on which you can work. And then you develop research questions about that. For example, you are looking at the nutritional status of your crops, that they are not feeling well, so they have some symptoms. For example, if you are looking at the crop plants and you see the yellowish color, so you have identified a problem which is relevant to the nutrition of the plant. And then now you have to develop a research question. So what is a research question then in that case? uh, because you, in theory, you have already studied that the yellow color is generally it is based on the nitrogen deficiency. So you will develop a research question, that is there nitrogen deficiency in that soil? So that is your research question. Your other question are the same question by another way can be uh, that whether the application, you are looking at the soil, and some people, they have applied the fresh manures in that soil, and you see, and you develop a question that is the manure or the fresh manure application is responsible for this nitrogen deficiency. So such kind of question you can develop, because you have to work on that and you have to answer those questions. So the problem exists, you are looking at the crops, so they are looking yellowish, and there may be many reasons for that. So there may be disease for that as well. So but what you are looking at,
So based on that, you develop some research questions for which you need answer. यानी आपने क्वेश्चन डेवलप किया है, अब आपको उसका आंसर चाहिए, उस आंसर के लिए फिर आपने रिसर्च प्रपोजल लिखी. After collecting or identifying or developing a research question, so you need to prove it. Collection of background information. कि क्या वो जो रिसर्च क्वेश्चन आप डेवलप कर रहे हैं उसकी कोई बैकग्राउंड भी है, कोई हवा में तीर तो नहीं है. Because if your research question is not based on scientific information already exists, so your questions are not valid. You cannot see anything out of the box that is not available already in the literature, and you are saying the you can say कि कोई awkward चीज आप जो है वो बता रहे हैं, तो वो नहीं हो सकता. अरे साइंस में जो भी काम जब हमने स्टार्ट में या मेरा प्रैक्टिकल के लेक्चर में पढ़ा है कि वो नॉलेज के ऊपर, लॉजिक के ऊपर बेस करती है. जो आपने रिसर्च क्वेश्चन डेवलप करना है दैट मस्ट हैव सम बैकग्राउंड, और वो बैकग्राउंड होगा उसी वक्त जब आप उसी फील्ड से हैं, उस फील्ड का आपको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है. फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन डेवलप किया है कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो सकती है. सो इज देयर ए नाइट्रोजन डेफिशिएंसी इन दैट क्रॉप? तो उसके बैकग्राउंड में है ना कि आप जानते हैं कि जब नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी तो वो येलो कलर डेवलप हो. तो दैट इज बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन. तो जो भी क्वेश्चन आपने बनाना है दैट मस्ट हैव सम साइंटिफिक बैकग्राउंड. अगर ये चीजें आपके पास होंगी तो आपने डायग्नोसिस कंप्लीट कर ली. यू हैव आइडेंटिफाइड योर एरिया, you have identified the problem, you have developed the research question, and you have collected all the scientific information which on which your research question is based. So when you have completed the diagnosis, then you have planning. And the planning, for planning you must have a clear definition of problem and cause. क्योंकि आपने उसमें कोई इंटरवेंशन करनी है, आपने उसके अंदर आपको प्रपोजल बना रहे हैं, आपने उसमें कोई एक्सपेरिमेंटेशन करनी है. तो इन फॉर दैट केस जो रिसर्च प्रॉब्लम आपने या क्वेश्चन बनाया है दैट मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड एंड causes. If you are saying that there's a nitrogen deficiency and you have already observed, which I give the example, that if there is a fresh manure in that soil, so you can say the one cause is that there is a fresh manure in the field, so that's why there is a nitrogen deficiency. So whatever you have problem or research question, so you have to clearly define that problem and you have to identify the causes of those problems. Or if you have one problem, even then you may have multiple causes. Then defining purpose and objective. So why you are doing that? Why you are interested to solve that problem? What are your objectives? So why you are spending time and money on that? So that must be clearly defined. So whatever you are going to do, that must be clearly defined, that I am going to do this because I have these objectives and this is the purpose of my work. So this is in planning. And then you decide the intervention, that what you can do. कि अगर कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है, उसके काजेस भी हैं, आपके पास एक क्लियर ऑब्जेक्टिव भी है और आपके पास एक पर्पस भी है, तो उसके बाद अगर आपके पास कोई इफेक्टिव इंटरवेंशंस नहीं है तो देन यू आर ब्लॉक्ड हियर. सो जब आपके पास ये दोनों चीजें क्लियर होंगी देन यू कैन डिसाइड दैट व्हिच काइंड ऑफ इंटरवेंशन यू कैन गो फॉर. सो दिस इज प्लानिंग. You are not the planning may not have any written part,
ये नहीं कि आपने कोई 2 पेजेस लिखने हैं, लेकिन अगर आप अपने दिमाग के अंदर भी ये चीजें क्लियर कर लें तो देन इट इज आल्सो सफिशिएंट. बट if you write these on the paper, so it's always helpful. So then you have the implementation. So whatever you have planned, can you implement that? So you have a very excellent planning in theory, but you cannot apply. So practically that fails. So you don't have ability to execute that. You don't have ability to monitor that. You don't have ability to collection of data for that experimentation. So in that case, you have to optimize everything. So whatever you have planned, can you execute that? So do you have time and expertise to monitor that? So do you have expertise and technical lab abilities to collect the data? So that you have to explain in implementation. If you have a very good planning, but you don't have implementation abilities, so it means that is not a successful research proposal. Then comes the evaluation. You have abilities and you have expertise, you have a technical ability. Then you have to evaluate that. कि जो हम काम करते हैं हमने उसको evaluate करना है. Analysis of data, जो data आपने लिया उसको analyze करना, उसको statistical analysis आप कह सकते हैं करना, फिर उसको interpret करना कि जो आपके objectives हैं उनके साथ उनको इंटरप्रेट करना, जो आपकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है आपके पास उस रेफरेंस से उनको इंटरप्रेट करना. So that is in the evaluation. And then based on that interpretation, you have to draw the conclusion. अगर आप उसको इंटरप्रेट अच्छी तरह कर सकेंगे, so then you will be able to draw the conclusion. And then you will see that whether you got some new knowledge or you have a technology or information to implement something. कि आप उसमें से कोई न्यू नॉलेज आपका हो सकता है कि आपने जो बेसिक, जो हमने स्टार्ट में अगर आप देखें उसमें हमने पढ़ा था प्रैक्टिकल के क्लास में, that you may have some new knowledge, basic knowledge, the mechanisms, understanding. So that is the new knowledge we get from the pure research. And from applied research, so we get some technology information. So if you can do that, if you can collect data and evaluate data, when we say analysis of data, so there are a lot of things in that. So you have to optimize that data based on already available information. अब ये नहीं हो सकता कि ऑलरेडी इंफॉर्मेशन कुछ और है और आपके यहाँ पे कोई और इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके बहुत अगेंस्ट है. तो आपने उस डाटा को चेक करना है कि वाकई ये उससे डिफरेंस इतना हो सकता है या नहीं हो सकता. हम कहते हैं नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन जो है वो जो उसके अंदर है टिश्यू के अंदर वो 2% है, लेट्स से 2.5% है, 3%. अब आपके पास एक डाटा आ रहा है उसमें आपने एनालिसिस किया है कहीं पे उसके 15% नाइट्रोजन उसके अंदर आ रही है. सो दैट इज नॉट पॉसिबल. तो आपने वो एनालिसिस ऑफ डाटा यहाँ से स्टार्ट करना है कि क्या उसमें कहीं पे कोई मेजर ब्लंडर तो नहीं है. तो उसके बाद जाके आपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है उसका, फिर उसको इंटरप्रेट करना है, फिर उससे कंक्लूजन ड्रा करना है. एंड कंक्लूजन इज व्हेन वी से इंटरप्रेट of interpretation of result and drawing conclusion. So it means you have a sufficient arguments to draw a conclusion. So whatever you are, whatever you got the results and you have interpreted that based on already available information, because in science, without logic, there is no value of any information. अगरचे वो सही भी होगी इंफॉर्मेशन तो उसकी कोई वैल्यू नहीं. कि आप हो सकता है कि आपके
आपने वो को थ्योरी दी है और आपके फौत होने के बाद 1000 साल बाद भी वो सही हो जाए, वो आपकी बात, लेकिन उस वक्त तक आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी उसको बेस करने के लिए, उसको बैक करने के लिए, उसको आर्गू करने के लिए। मेंडल्स लॉ के एग्जांपल आपके सामने है। मेंडल्स ने जब लॉ दिए तो ही वाज नॉट अ वेरी गुड साइंटिस्ट, and that's why he didn't have sufficient information to convince the scientists, so his theory was not accepted at that time. वो तो बाद में कहीं जाके लोगों ने जब उसकी बैक, या आप समझें कि उसको आर्गू करने के लिए इंफॉर्मेशन डेवलप की, तो फिर उन्होंने कहा कि वो मेंडल ने जो कहा था वो ठीक। लेकिन जब तक आपके पास उसको आर्गू करने की इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो आपकी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है, बेशक वो सही भी हो। So based on that, you can draw a conclusion, of course, और ये conclusion की strength that depends that which are your arguments, how strong are your arguments. तो जितने आपके arguments strong होंगे, जो results हैं उनको साबित करने के लिए, confirm करने के लिए, उतना आपका अच्छा conclusion होगा, वो accepted। तो ये तो था रिसर्च प्रपोजल जो हम रिसर्च को ही करते हैं। उसके बाद है साइंटिफिक पेपर। अब साइंटिफिक पेपर जो है उसमें भी पहले डायग्नोसिस है, प्लानिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है, एवेल्युएशन है, ये वही चीजें जो यू हैव डन। अब ये चारों चीजें जब मिलती हैं तो देन साइंटिफिक पेपर डेवलप होता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में ये देखेंगे कि यहाँ कहाँ कहाँ पे ये यूज होती है। ये चार चीजें जो हमने साइंस या रिसर्च को कंडक्ट करते वक्त हमने कंसीडर की थी, तो दे आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर राइट अप। So this is the writing cycle. So you have introduction, you have review of literature, you have research gaps, goals, objectives. तो ये सारा कुछ जो आपने डायग्नोसिस में देखा, जो प्लानिंग में देखा, वो सारा कुछ जो है आपका इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च गैप इसके अंदर आ गया। तो कोई भी साइंटिफिक राइटिंग, so you are writing a research paper or thesis, so you have to give all these diagnoses and the planning in this part. So you have to mention the goals and the objectives. You have to mention the research gap in that. So this is the first part of your scientific paper or your what you say research thesis, any scientific document which you are presenting somewhere. So then you have a materials and method, which is the implementation methodology, that which method you will choose, what kind of experiments you will conduct. And then we have result analysis and interpretation, discussion, conclusion, implication, and limitation. So that is basically evaluation. So which we have already discussed here, the fourth part. So in this way, we can develop a research proposal and then we can have a scientific writing. So your research की प्लान डायग्नोसिस है, प्लानिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है, एवेल्युएशन है, वो रिसर्च की एवेल्युएशन है, और फिर उसके बाद हम एक साइंटिफिक राइटिंग जो है उसी की बेस के ऊपर हम लिखते हैं जो हमारे रिजल्ट्स को प्रेजेंट करती है। तो दैट इज बेसिकली द आउटकम विच वी गॉट। सो जो रिसर्च हम करते हैं, जो रिसर्च का वे आउट है, जहाँ पे हमने सोचना है और फिर उसको हमने एक साइंटिफिक पेपर के अंदर ट्रांसलेट करना है आफ्टर गेटिंग रिजल्ट्स, so that is basically the cycle of our science. So that was all about today. If you have any question, you can ask. Thank you very much.